Hello students, welcome to this new tutorial about uses of computer. Today I am going to talk something about the uses of a computer, but before that I want to make some clarification about my videos. Actually some of the students, they have requested me to make all the videos in English and Hindi, but I am very sorry to say that you can find there are many videos, or you can say thousands of videos about computers in Hindi and English, but you rarely find some videos in Odia. That's why I concentrate on making the videos for the Odisha Adarsh Vidyalaya students in both in Odia and English. So those students who cannot understand Odia, better you can wait for few months or few days for me to complete the series in Odia. Then after that I can make the videos only in English or maybe in Hindi. So thank you very much for watching my videos. So keep learning. Now we'll learn the things from the second episode. So again I talk the notice. This tutorial has been made for the class 6 students of Odisha Adarsh Vidyalaya to follow their ICT textbook chapters. We have used bilingual method, that is both in Odia and English method, for better understanding of the Odia medium students who have joined OAVS. Other audience who want to learn the basic computer concept can also follow our tutorials. So what to learn in this episode? In this episode we can learn different uses of computer. That means uses at school, at banks, hospitals, business, entertainment, communication, industries, scientific application, railway and airline reservation, online business and e-learning, etc. So in this era of computer, that means this is the modern era. So in this modern era, computers are used almost everywhere in our daily life. The following are the uses of computer at school, bank, hospital, business, entertainment, communication, industries, scientific application, railway, airline reservation, online business, e-learning, etc. So here I want to make something clear that this is the era of a computer. That means you cannot do a little thing without using computer these days, because wherever you go, computer is directly or indirectly involved within the things. Just like you make a phone call. Suppose you are making a phone call to your friend or to your relative. So whenever you are using mobile phone itself is a microcomputer. So you are directly using a computer to make a call. Again, whenever you are making a call, that means to make the call, to connect the call from one mobile phone to another mobile phone, to check balance, to charge for the call, everything is managed by the computers at the mobile phone office. That means we are talking over phone, but computers are indirectly involved within those tasks. आम जो ओडिया रे कहया को चाहिबा जे आजिकली होची आधुनिक जुग, जोटा कि कंप्यूटर जुग कहले चले, जोठी कि आमे प्रत्येक काम करिया पे हमको आवश्यक होची कंप्यूटर. तो बिना कंप्यूटर आमे कोनोसी प्रकार काम करि परिबा नाही. जोटा उदाहरण दोथले मु जे सपोज आमे गोटे कोन करछंती ना जनकू कॉल करछन मोबाइल फोन रे, आमे जनकू कॉल कले, तो आमे जेतर मोबाइल फोन रे जनकू कॉल कला, हमर फ्रेंड हो कि रिलेटिव हो, जनकू कॉल कला समय रे मोबाइल इटसेल्फ होची गोटे कंप्यूटर बा जोटा कि आमे कहछन माइक्रो कंप्यूटर, जोटा कि आमे भविष्य रे पढिबा जे मोबाइल को आमे काहे कि माइक्रो कंप्यूटर कहछंती. तो से जो माइक्रो कंप्यूटर को आमे डायरेक्टली व्यवहार करछन, ता व्यतीत आउ कोन कंप्यूटर टा यूज होची ना, आमे जेतर मोबाइल के रिचार्ज करछंती, कि बैलेंस पकोछंती, आमे केते समय कथा होछंती, केते डेटा रहिला, बा आमे इंटरनेट यूज करछंती, हमर जो मोबाइल रो आगुड मोबाइल को कनेक्शन होची, ई सब गुडा को काम कोन होची ना, मोबाइल जो ऑफिस रहउची, मोबाइल फोन ऑफिस रहउची, से ऑफिस रे तो कंप्यूटर माध्यम रे ई सब काम गुडा को हेइ परची. तो आमर बहुत गुड़ा यूजेस अच्छी कंप्यूटर, जमी स्कूल रे आजिकल कंप्यूटर व्यवहार होची, बैंक रे व्यवहार होची, हॉस्पिटल व्यवहार होची, व्यवसाय व्यवहार होची, एंटरटेनमेंट बा आमे किछि एंटरटेनमेंट बा मौज मजलिस करिया पे व्यवहार करछिन, कथावार्ता पई, कम्युनिकेशन बा आमे फेसबुक हो बा व्हाट्सएप हो बा ट्विटर हो, ई सब पई व्यवहार करछिन, मोबाइल फोन बा कंप्यूटर यूज करछिन. इंडस्ट्रीज कल कारखाना मध्ये व्यवहार होची. हमर साइंटिफिक एप्लिकेशन जोठी वैज्ञानिक माने विभिन्न प्रकार रिसर्च बा गवेषणा कार्य करिया पे मध्ये व्यवहार करछन्ती. आजिकली हमर रेलवे, बस, मूवी टिकेट बा विभिन्न प्रकार
खेल मनकर क्रिकेट खेल हो फुटबॉल खेल हो मैच पे टिकेट रिजर्वेशन सब ऑनलाइन हो पार्ची आजिकल ऑनलाइन बिजनेस जमी अमेजन फ्लिपकार्ट ये सब गुड़ाक हो सहित सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ई लर्निंग जोटा कि बर्तमान तुम कौन करुच ना टीचर मान को न देखिकी बा टीचर मान ठारू दूर रही तुम कंप्यूटर माध्यम देखी से ठारू तुम लेसन शुणी पार्छ तो बर्तमान तुम जो पाठ पढ़ुछ यहाँ कहूँ ई लर्निंग अर्थ हूँ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक अर्थ हूँ कंप्यूटर किंबा रिलेटेड डिवाइस को यूज कर कहूँ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग अर्थ हूँ पाठ पढ़ा तो कंप्यूटर किंबा रिलेटेड डिवाइस जोटा कि मोबाइल फोन हो टैबलेट हो लैपटॉप हो या व्यवहार कर आम पाठ पढ़ा कहूँ ई लर्निंग ताहले आम गोटे गोटे डिटेल बुझा यूजेस ऑफ कंप्यूटर तो फर्स्ट यूज कंप्यूटर्स यूज्ड एट स्कूल In school, computers are being used to teach students using CD, DVD projectors in multimedia classroom. आजिकली कौन होची ना कंप्यूटर को व्यवहार करके पिला मान को स्कूल रे सहज रे पाठ पढ़िया पाए बोली कौन करा होची ना मल्टीमीडिया सीडी बा डीवीडी को व्यवहार करके पाठ पढ़ा होची आजिकल तुम देखिथिबो विद्यालय गुडक रे प्रोजेक्टर लागि गलानी बहुत गुडा स्कूल रे एमती केते स्कूल अछि जोटी लागिनी किंतु प्रोजेक्टर माध्यम रे कौन करा होची ना तुमको अति सुंदर भाबे मल्टीमीडिया रो सब पिक्चर गुडा थाई की वीडियो थाई की जो विभिन्न सब्जेक्ट जमी विज्ञान हो भूगोल हो इतिहास हो ये सब जिन गुड़ाक पाठ पढ़ाई पार्ची सो इन द स्कूल्स कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स यूजिंग सीडी डीवीडी प्रोजेक्टर एंड मल्टीमीडिया क्लासरूम सो मोस्ट ऑफ द टाइम means in old times not most of the times but in old times when there were no computers so the teachers were teaching by using books and other study materials like maps or some models or we can say some living organisms but these days we no need to use living organisms or maps hard maps or we can say no need to use many type of instruments because in the computer there are many simulations the teachers can show you the different type of models by using projectors and the people can understand the different type of experiments from different type of multimedia CDs and DVDs. So study becomes easy by using computers at the school. So this is the first use. Then the second use is computers used at the banks. So whenever we are going to bank, you can see there are many employees at the bank. All of the people they are sitting with a computer. That means what are they doing with the computer? Are they playing computer games? No. Actually, they are working with the data related to the bank. So what kind of information related to bank? Banks use computers for making calculation and store large amount of information which otherwise would require lot of paper. So whenever we go to bank, we can find they are make some calculations. So whenever we are withdrawing some money or whenever we are depositing some money, they use their computer. They check our balance. Then they ask you how much money you want to deposit or how much money you want to withdraw or whether you want to apply for a loan. So how much interest for the loan. So all kind of information about the customers, their bank balance and their interest rates, their loans, everything they are calculating by using the computers. So because of the computers, they are just we can say they are saving papers. Without using papers, they can make many difficult or you can say complicated calculations within less time. आम जो ओडिया कहवा जे बैंक गुड़िक कंप्यूटर व्यवहार कर बहुत प्रकार आर्थिक निर्णय बा हिसाब पत्र बहुत सहज कर आउ यही सब जो हिसाब पत्र करने से बहुत कागज कलम किसी लेखालेखी करा पड़ता कि जो कागज कलम व्यवहार न कर बहुत काम कर कंप्यूटर व्यवहार फल बैंक गुड़िक बहुत गुड़ाए प्रचुर परिमाण कागज नष्ट होवर बंची जाए. Computers used at hospitals. Nowadays, wherever you go in the hospital, you can find some computers. So maybe people will amazed why there are many computers in hospitals too. Are they playing computer game or are they make fun with the computer? So it is not true. In hospital, there are many type of information stored, just like doctor's information, staff's information, patient's information, blood information, equipment information, some kind of diagnosis reports, some type of surgeries can be done by using computers. So nowadays, most of the time, the doctors are using computers like laparoscopic surgery or you can say laser surgery. All those things can be done by using computers. So many type of blood test or you can say heart test, ECG or you can say CT scan, MRI scan, all those type of scans can also be done by using computers.
That's why computer play a very important role at the hospitals. आम जो ओडिया कहे डाक्तखाना गुड़े कंप्यूटर व्यवहार कर विभिन्न प्रकार परीक्षा अस्त्रोपचार डाक्तर और रोगीर तथ्य इत्यादि को गच्छित कर व्यवहार हुए आम जदि हॉस्पिटल को जीवा तो आम देखिए हॉस्पिटल रे कंप्यूटर रे आमर विभिन्न प्रकार रोगीर इनफॉरमेशन रखा जाए डाक्तर इनफॉरमेशन रखा जाए बा विभिन्न प्रकार जो टेस्ट करा जाए कंप्यूटर को व्यवहार कर टेस्ट जमी अल्ट्रासाउंड कराऊँगी सीटी स्कैन कराऊँगी एमआरआई स्कैन कराऊँगी डिजिटल एक्सरे कराई थाउची एमती आमर आजिकल जो लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कराई बा लेजर ऑपरेशन कराऊँगी बा कॉस्मेटिक सर्जरी कराऊँगी आजिकल विभिन्न प्रकार सर्जरी बा ऑपरेशन आमर जो कराऊँगी सेगुड़ा कंप्यूटर माध्यम कराई पारुछि तो सेथिपे आमे कहउछन्ती जे कंप्यूटर निहाती भाबे आजिकल हॉस्पिटल मध्ये बहुत बड़ रोल प्ले करुछि। Next, computers used at business. Nowadays you can find even the small shops they are using computers. So why do they use computers at small shop? Because in business computers are used for making long calculations for accounts, store huge amount of data related to business and billing etc. So whenever you go to a shop you can find in the shop there are many products. So whenever they buy some products, whenever they sell some products, whenever they are making billings, they are using computers. So in that method the work become easy and the calculation make flawless and errorless. So what do they do? So whenever they buy products for their shop, they enter all the products by using some code number or you can say barcode, and they put some price tag. So after that, whenever they want to sell something, at the time of billing, they can follow the barcodes to make the bill, and they can calculate how much the total price, and they can also maintain their stock, how much stock they have in their shop and how much they have making profit, and what is the tax payment or what are the accounts status. All those kind of complicated calculations can be made by the computers. जदि आम ओडिया कहे व्यवसाय क्षेत्र में कंप्यूटर को व्यवहार कर विभिन्न प्रकार जटिल हिसाब पत्र कराए से संपर्क तथ्य गच्छित और रसीद तैयारी करा जाए। आम जो गोटे दुकान में देखुं गोटे कंप्यूटर रोचे से कौन करती ना दुकान में जहाँ किसी जिनिस किणिकी रखुंट प्रत्येक जिनिस गोटे गोटे कोड देकी कंप्यूटर से एंट्री करते। एंट्री करने द्वारा कौन हुए ना प्रत्येक से दुकान में जिते जिन थाए सब गुड़ाक डेटा रहीगला कंप्यूटर मध्यम। तो जिते कौन लोक किसी से दुकान रू किसी द्रव्य किणिला तो किणीनेला समय जो बिल कर सपोज आम 10टा कि 15टा जिनिस किणवा तो सब गुड़ाक जिनिस को आम बिल करने आमको कैलकुलेटर धरी हिसाब करा पड़ो। तो आम जो कंप्यूटर थी कंप्यूटर कौन थाए ना गोटे मेसीन लगी था बारकोड रीडर बोली कहूँ जोटा कि आम हार्डवेयर सेक्शन में पढ़ा से बारकोड मध्यम शीघ्र भाव से कौन कर बारकोड गोटे रेड कलर लेजर लाइट बाहर थो से लेजर लाइट पकड़ द्वारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक जान दिए से प्रोडक्टर प्राइस केते। तो से अति सहजरे से कौन करपारती ना बिल करपारती। बिल करने सहित टोटाल केते टंका आम देले केते टंका तांकर लाभ होला केते टंका तांकर क्षति होला बा केते तांकर टैक्स दिया जिवो बा केते तांकर स्टॉक रहिले बा को जिनसर एक्सपायर डेट पळै जायछि ए सब जिनस गुडाक से कंप्यूटर माध्यम अति सहजरे जानि पारंती जोटा कि मैनुअल करिया पे तांको बहुत समय लागि थांदा। नेक्स्ट आसिला कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट. So computers are being used to play video games, drawing, art, watching videos, listen to music, etc. So most of the people, you can say, they are using mobile phones to play video games like a PUBG game or Ludo or chess or many different type of card games, rummy, etc. Even some people, they are using mobile phones to draw different type of digital arts, and we can also watch the high definition videos, and we can also listen to music online and offline. So these are the method of entertainment. Even some people, they are using computers for learning dance, just like here you can find the picture. So there is some simulation software. So the person, the girl, she is facing towards the computer and she is practicing dance with the simulation. And here you can find these are the simulated software which are using to play the car racing games. So here you can find many people, they are playing car racing games by using computer and joystick like car steering.
आम जो ओडिया कहवा जे कंप्यूटर व्यवहार कर विभिन्न प्रकार वीडियो गेम खेली पार, चित्र आंकी पार, वीडियो देखि पार, संगीत शुणी पार। आम कंप्यूटर रे विभिन्न प्रकार गेम खेलु। आजिकल पिला माने मध्ये बहुत छोट बड़ गेम जेमि पबजी खेलुछंती बा लूडो खेलुछंती बा रमी गेम खेलुछंती बा टेम्पल रन खेलुछंती, विभिन्न प्रकार गेम खेलुछंती। ता सहित आम चित्र मध्ये आंकी पारछंती, विभिन्न प्रकार हाई डेफिनेशन वीडियो देखि पारछंती, म्यूजिक ऑनलाइन रे सुनी पारछंती, ऑफलाइन रे सुनी पारछंती। तो ई सब गुडा को होचे हमर मनोरंजन माध्यम। सेति आम कहला कंप्यूटर से यूज फॉर एंटरटेनमेंट। The next, computers are used for communication. This is most important part. Computers are used for communication. Computers are being used to send email, voice and video chat, video conferencing, surfing the internet, social media, etc. So these days, the people, they forget about the telephones or the letters, snail letters. So what they are doing these days, they are using WhatsApp, Twitter, or you can say Facebook. They can make video chat, they can make video conferencing, they can make group chat, they can make a conferencing call. So this is possible because of the computer technology. So computer is used for communication because it is very fast and it is almost free. If you have internet, then it is a free service. So most of the time the people, they are using internet to make a communication over the computers, or you can say communication by using computers over internet. So because of the internet, the communication becomes speed, and communication becomes easy, and communication becomes very cheap. आम जो ओडिया कहवा कंप्यूटर को व्यवहार कर इंटरनेट माध्यम आम ईमेल, वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि द्वारा द्रुत गति जोगाजोग कर पारि थाउ। आजिकली आम आउ टेलीफोन को व्यवहार करना कि चिठी पत्र व्यवहार करना। आजिकली आम कौन कर मोबाइल माध्यम इमेल पठे दौरान व्हाट्सएप रे चैटिंग कर, फेसबुक रे चैटिंग कर, आजिकली आम ट्विटर में चैटिंग कर, बहुत गुड़ाए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बा ऐप बाहर, टेलीग्राम ऐप बाहर, एमती बहुत गुड़ा ऐप माध्यम आम कौन कर वॉइस चैट कर कथा ही पार्टी, वीडियो चैट आम वीडियो चैट करने सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर, बहुत लोग एकाथर के आम ग्रुप चैट कर। तो यही सब गुड़ाक आमर कंप्यूटर आउ इंटरनेट सफल व्यवहार हेतु संभव हो पारे। सो कंप्यूटर्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स एट साइंटिफिक एप्लीकेशन। Scientists use computers to difficult research work and experiment by simulations. Actually, these days, many of the things are developed by simulation software for the scientific research and experiments. Because every time it is impossible to do something very practical. That means maybe it will make a financial loss, and maybe it will harm some other people. That's why the scientists, they are using some simulation software to make some like medicine research. We can say human research. Like every time we cannot find a fresh human body to make an experiments, or every time we cannot find a fresh animal body to make some experiment. That's why the scientists, they make some simulation software of a human body or some animal body. So whenever they want to make some kind of research or operation or surgery, they can do the simulation software, and they can make some research, or maybe they can make some experiment in the operation with the simulation human body. So in that way, it is very easy, and it is very we can say cost saving, and it is also time saving, and it is also very easy for the people to follow the things by repeatedly learning those experiments or research work. वैज्ञानिक माने कंप्यूटर व्यवहार कर विभिन्न प्रकार जटिल गवेषणा परीक्षा सिमुलेशन माध्यम करते। आजिकली वैज्ञानिक माने आउ लैब रे जो विभिन्न प्रकार केमिकल को ने एक्सपेरिमेंट करथले, से केमिकल बा रासायनिक पदार्थ ने एक्सपेरिमेंट करू नाहंती। बा मनकर आमे कहिबा जे गोटे मनुष्यर शरीर रे विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट करिवार अछि, ताहाले सबुले त हमको गोटे मनुष्य शरीर मिलिबा कष्ट। सेति पे कोन करा होछि ना, मनुष्य शरीर गोटे सिमुलेशन करा जाइथिबो, जो सिमुलेशन करिया द्वारा मनुष्यर प्रत्येक विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग को कंप्यूटर माध्यम रे बहुत भल भाबे चिन्हि परिबा बा जानि परिबा, ता विषय रे पढि परिबा। आ ताको कंप्यूटर माध्यम रे आमे विभिन्न प्रकार जो अस्त्रोपचार करि परिबा बा ताको एक्सपेरिमेंट करि परिबा, तापर आमे रिसर्च करि परिबा, जा फल रे कि हमको बहुत सहजरे एवं बहुत कम समय एवं बहुत कम खर्च रे आमे एही परिका सिमुलेशन माध्यम रे सिखि परिबा। कंप्यूटर्स यूज्ड एट रिजर्वेशन।
Bus, train, flight, hotel, restaurant, movie tickets can be booked or reserved by using computer at your fingertips. Nowadays, you can find many people, they can book their tickets at home by using their mobile phones or computers. So people, when they want to move someplace, maybe they want to use bus or train or flight, or maybe they want to stay at some hotel in distant place. Suppose you are going for a trip to Goa, or maybe if you want to travel to Taj Mahal, then you no need to know any hotel nearby, or you no need to go there and find hotels by yourself. Maybe all hotels are booked. So at your home, at your fingertips, you can open your computer, or you can open your mobile phone, and you can buy the train ticket or a flight ticket, or maybe you can book a bus ticket, and you can choose the favorite hotels or restaurants or movies, all those things at your fingertip. So life becomes very smooth because of those type of a reservation at the counter. Instead of counter, you can do all those things at your fingertip by using a mobile phone or computer. जदि आम कह बस, रेल, उड़ाजाहाज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा आदि टिकेट आजिकल घरे बस कंप्यूटर मध्य बुक कर पार्टी। आजिकल आमको आ ट्रेन टिकेट जाइए स्टेशन में लंबा लाइन छिड़ा पड़ुनी, बा होटल को जाइए सेठी आम पचार पड़ुनी आज्ञा सेठी रूम किसी खाली अच्छी कि रेस्टोरेंट रे आम जाई पचार पड़ुनी जे आज्ञा आपनकर सेठी किसी खाद्य अच्छी कि बा सिनेमा हॉल रे आम जाई लाइन रे छिड़ा पड़ुनी टिकेट आने पे। आजिकल मोबाइल किंबा कंप्यूटर माध्यम रे आम घरे बसी मध्य बस किंबा रेल किंबा उड़ाजाहाज ये सब टिकेट गुड़ाक आम आराम रे घरे बसी काटि पारछंती। कोनोसी होटल रो रूम मध्य आम बुक करि पारछंती, कोनोसी रेस्टोरेंट मध्य आम खाद्य मगै पारछंती ऑनलाइन रे, किंबा आम सिनेमा जिबा पे हेले कोनोसी सिनेमा टिकेट मध्य आम घरे बसिकी काटि दउछंती, जा पर आम जाइकी से ऑनलाइन टिकेट देखि आम आराम रे सिनेमा देखि आसी परिबा। एहा द्वारा हमर कोन होची ना समय बंचिया सहित आम परिश्रम मध्य बंचि जाउछि। Next is computer use for e-commerce. This is very popular things these days. Nowadays, computers and mobile phones are being used to buy or sell products and services online at fingertips. So many of the people they are crazy about online shopping. So many people you can find in their free time they are surfing internet to surf something like mobile phones, shoes, clothes, or you can say watches, or you can say different type of things like bicycles, speakers, sound boxes, or you can say sound system, and many more cooking items, or you can say the utensils. So it depends on the people's choice. So whenever you find some people they are watching something on the internet, that means they are comparing the prices from different websites sites like in India you can find Flipkart, Myntra, or you can say Jabong, or you can say Amazon, we can say eBay. There are many different type of websites we are using to buy or sell products. So you can buy something from the internet in cheap price at your fingertip. That means you can stay at home, you no need to go any place. You just open your mobile phone, open the app, search the product, and place an order, maybe cash on delivery, or maybe they will deliver at your place, and you can pay the money, or you can pay online. So there are many different methods for online shopping. That means you can buy things or products, or you can say services at your fingertips at your home. That means you no need to go anywhere. You just stay at your home and the product will come to your doorstep, or you stay at your home and the service will come to your doorstep. So this is called online shopping, or you can say e-commerce, or you can say electronic commerce. कंप्यूटर और मोबाइल को व्यवहार कर ऑनलाइन जिनस पत्र किना बिका और विभिन्न प्रकार सेवा हाथ पांतर जोगाई दि पार्छ। आजिकल देखिदेव पिलाने जे मोबाइल बहुत प्रकार ऐप रोचे जोटा कि आम कहते फ्लिपकार्ट रोची बा हमर अमेजन रोची बा ईबे रोची बा जाबंग रोची बा मिंत्रा रोची बा बहुत गुड़ाए आमर अच्छी ऐप जोठी कौन होची ना विभिन्न प्रकार जिनस को अति कम मूल्य रे बिक्री करा जाउची, जोटा कि आमे घरे बसिकी आमे ऑर्डर करि परिबा। आमे ऑर्डर करिवार 2 दिन किबा 3 दिन बा किछि समय बा किछि दिन परे आम घरे सेमान आसी जिनस देई जाउछंदी। तो यही माध्यम रे कौन होची ना हमर बहुत गुड़ा समय बंचुची बा आम इच्छा आमे जेतेबेले आमे जिनस को ऑर्डर करछन। सपोज आमे कहि परिबा जे राति अधरे मोर निद भांगेला मते किछि जिनस मन पड़ला किनिया पई, तो सेतेबेले तो दुकान खोला नथिबो। आमे जदि कोनोसी दुकान को जिबा पई चाहिबा किनिया पई सेतेबेले दुकान खोला नथिबो, किंतु सेतेबेले को दुकान खोला थिबा ना ऑनलाइन शॉप खोला थिबो। ऑनलाइन शॉप रो अर्थ होची आमे जेतेबेले ताको देखि पारे, राति हो दिन बेले हो सकाळे हो जे कोनोसी समय आमे सेठी देखि परिबा जिनस को ताको ऑर्डर करि पारे। ऑर्डर कला परे कोन होची ना आमे ऑर्डर करिया परे तार जेतेबेले जो दुकान
दुकान मालिक जे हेतिबो सी जेतोले से जिनसटा को देखिबो सी सेतले हमर ऑर्डर टा को प्लेस करिवो आ सी तार जदि पेमेंट ठीक ठाक हे जायछि बा कैश ऑन डिलीवरी मेथड रे सी हमबा को जिनस पठाए एटा होछि हमर ई कॉमर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट कंप्यूटर्स यूज फॉर ई लर्निंग Nowadays, many students are using mobile phones and computers to learn their subjects from their teachers online. So here, you are learning the things from your mobile phone or from your laptop or from your computer, from YouTube or maybe from some other websites like Google or some any kind of websites. So wherever you learn from your teacher or from the website by using internet or computer or mobile phone, then that is called e-learning, or you can say that is electronic learning. So electronic means by using electronic media, or you can say computer or related devices used for learning is called e-learning. आम जब ओडिया रे कहिबा जे कंप्यूटर एवं मोबाइल को व्यवहार करी ऑनलाइन रे शिक्षक माने पिला मानन को पाठ पढ़ाई परछन्ती. तो एबे हमर जो रही कोविड पैंडेमिक सिचुएशन रे पिला माने स्कूल को जाई परनाहंती. तो पिला माने स्कूल को जतल जाई परनाहंती ताले पिला माने पाठ केमति पढिबे सेथि पय माने कोन करछन्ती ना पिला माने मोबाइल व्यवहार करछन्ती बा कंप्यूटर व्यवहार करछन्ती. ता सहित टीचर माने मध्य कोन करछन्ती ना मोबाइल किबा कंप्यूटर को व्यवहार करी से माने किछि वीडियो करछन्ती बा किछि कंटेंट तयारी करिके पिला माने को पठाउछन्ती. तो पिला माने सेही जो जिनसटा को तांकर निजर मोबाइल माध्यम रे देखि ताको सुनी सेही जिनस गुडा पाठ पढि परछन्ती. तो मोबाइल हो बा कंप्यूटर रिलेटेड जे कोनसी यंत्रपाति को व्यवहार करी कि पाठ पढियाटा को होछि ई लर्निंग. Now questions: in which area we can use computers? How do we use computers at hospitals? How do we use computers for e-learning? Can we use computers for online shopping? How can we use computers for entertainment? How computer become faster communication medium? What kind of reservation can we make by using computers? So that's all for this tutorial. Thank you very much for watching this tutorial. Your comments and feedbacks are valuable for us to improve our next episode. And please do not forget to like my video and subscribe to my channel and share this video to many of your friends so that all of your friends can learn at home in this COVID pandemic situation. Thank you very much. Have a nice day.